Hello students, welcome to NV Commerce Academy. Our today's topic is properties of arithmetic mean. This concept is very important. Arithmetic mean is the basic of statistics. So, first property, sum of deviations of items taken from mean is always 0, which means summation dx is always equal to 0 as dx is calculated x minus x bar. अगर आप एक सीरीज में से मीन को सब्ट्रैक्ट करते हो और उस कॉलम को सम अप करते हो तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा? 0 होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ deviations taken from mean is always least in comparison to deviations from assumed mean. अगर हम डेविएशंस अरिथमेटिक मीन से ही लेते हैं और उसके बाद स्क्वायर करके सम अप करते हैं कॉलम को तो दैट वुड बी लीस्ट रादर देन इफ वी टेक द डेविएशंस विद द assumed mean. Now suppose our series is 5, 6, 7, 8 and 9. So we can sum up, that is 35. Total number of observations are 5. So mean clear cut here is 7. If I am calculating deviations means अगर मैं इस सीरीज में से अपने मीन जो कि 7 है उसे सब्ट्रैक्ट करूं it would be -2, -1, 0, 1 and 2. अगर मैं इस सीरीज को सम अप करूं तो आंसर would be 0, which is our first property. Summation dx must be 0. And अगर मैं इसे स्क्वायर करूं 4, 1, 0, 1 and 4, that is 10. In contrast, let's take an example of assumed mean as well, taking the same series here 5 to 9, and now I am taking deviations with the assumed mean and I am assuming 6 as assumed mean, -1, 0, 1, 2 and 3. अगर मैं इसे सम अप कर रही हूं तो दैट इज 5. अगर मैं इसे स्क्वायर कर रही हूं तो इट इज 15. सो अगर मैंने मीन से डेविएशंस ली तो वो क्या थी? लीस्ट थी. अगर मैं मीन को छोड़कर और किसी भी आइटम से डेविएशंस लूंगी तो वो हमेशा क्या होगी? 10 से अबव ही होगी. और जो dx का सम है वो भी यहाँ पर एक नंबर फॉर्म में होगा, 0 नहीं होगा. 0 सिर्फ और सिर्फ उसी केस में होगा जब डेविएशंस हम एक्चुअल मीन से लेते हैं. सो 2 प्रॉपर्टीज आर देयर. डेविएशंस फ्रॉम मीन, सम इज 0. डेविएशंस फ्रॉम मीन, सम इज लीस्ट. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, इफ वी आर हैविंग मीन and number of items of 2 or more series, then we can calculate combined mean just by application of a formula. And what this formula is, we have already discussed. N1 mean 1 and 2 mean 2 divided by N1 plus N2. If we are having 3 series, we can extend this formula this way. N1 mean 1, N2 mean 2, N3 mean 3 divided by N1 plus N2 plus N3. Next property, if we add, subtract, multiply or divide
series by a number, then mean affects in the same way. Let's explain it with the help of example. Suppose our series is 1, 2, 3, 4 and 5. If I sum up, it is 15. 5 items means mean is equal to 3. If I add 2 to this series would be 3, 4, 5, 6 and 7. If I am summing it up, it is 25. Again number of items 5 and mean would be 5. So अगर मैंने यहाँ 2 ऐड किया है तो मेरे मीन में भी जो चेंज आया है वो 2 का एडिशन ही आया है, राइट? सेम if I multiply this series with 2. So 2, 4, 6, 8 and 10. अगर मैं इसे सम अप करूं, it is 30. n is 5, so mean is 6. So अगर मैं 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, it is again 6. So what is concluded here, that if we add, subtract, multiply or divide our series by a number, then mean get affect in the same way. So our last property is mean of natural numbers in continuity can be obtained by a formula, that is mean is equal to n plus 1 divided by 2n. So if I am taking observations 1, 2, 3, 4, 5, 6, sum is 21. 21 and items are 6. So mean here is 3.5. Same can be calculated with the help of this. Here number of items are 6. So 6 plus 1 divided by 2 into 6. 6 into 7 by 12, which is 3.5.